तो सेकंड पार्ट रो पीडीएफ जो 16 पेज रो पीडीएफ तुम पाक जाइतिला पिला माने आम सेकंड पार्ट रो पीडीएफ रो बर्तन स्टार्ट करिया। जे प्रथम थिला कोल्हार्स लॉ, कोल्हार्स लॉ। अच्छा और ताको हमें कहते कोल्हार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोल्हार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कोल्हार्स, at infinite dilution, when dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance or molar conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated, and the value of equivalent conductance or molar conductance at infinite dilution or zero concentration, that is lambda E0 or lambda M0, is given by the sum of the contributions of the two ions. अच्छा, अगर स्टेटमेंट में बुझा at infinite dilution when dissociation is complete, जिते बड़े इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को आम डाइल्यूशन को इनफिनाइट करदेले सेते बड़े आम एज्यूम कले जे इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो गला, डिसोसिएट हो गला। तेबे से इनफिनाइट डाइल्यूशन समय रे each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance or molar conductance, अर्थात प्रत्येक आयन रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस प्रति एक निर्दिष्ट अवदान अछि, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विथ व्हिच इट इज एसोसिएटेड। से जो आयन सहित एसोसिएट होकर रहू ना कहीं। फॉर एग्जांपल आम गोटे जगह पोटासियम क्लोराइड नेले आ गोटे पोटासियम ब्रोमाइड नेले। पोटासियम क्लोराइड रो कंडक्टेंस कहा जुगु ना पोटासियम आयन जुगु क्लोराइड आयन जुगु, पोटासियम ब्रोमाइड रो पोटासियम आयन जुगु एवं ब्रोमाइड आयन जुगु। जेते बेले आम इलेक्ट्रोलाइट रो सॉल्यूशन पोटासियम क्लोराइड बा पोटासियम ब्रोमाइड को इनफिनाइट डाइल्यूशन रे नै चंती, सेते बेले पोटासियम आयन रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस रो एक निर्दिष्ट वैल्यू अच्छी। से क्लोराइड आयन सहित एसोसिएट होकर रहू बा ब्रोमाइड आयन सहित एसोसिएट होकर रहू।
पोटासियम आयन रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू क्लोराइड बा ब्रोमाइड आयन सहित एसोसिएट हेले कोनोसी परिवर्तन हबो नाही। प्रत्येक आयन रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस प्रति एक निर्दिष्ट अवदान रहिबो से जो आयन सहित एसोसिएट हेकि रहना काहेकि। एवं इनफिनाइट डाइल्यूशन रे जीरो कंसंट्रेशन रे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू दुईटी आयन रो कंट्रीब्यूशन रो समष्टि सहित समान। तामाने मु जदि मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहबी AX BY तेबे एठी AX BY इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ही सॉल्यूशन रे देथिबो X मोल्स ऑफ AY प्लस Y मोल्स ऑफ BX माइनस। तेबे ए दुईटी आयन रो कंडक्टेंस रो समेशन सहित समान। सो लैम्ब्डा M0 of electrolyte AX BY is equal to X moles into conductance of A Y plus at zero concentration plus Y into conductance of B X minus at zero concentration बा ताको आउ शॉर्ट रे हमें रिप्रेजेंट करि परिबा। शॉर्ट रे रिप्रेजेंट करि परिबा X into लैम्ब्डा 0 कार्टियन प्लस Y into lambda 0 anion, where X and Y are the number of cations and anions produced by 1 mole of the electrolyte or 1 formula unit of the electrolyte, and lambda 0 C and lambda 0 A are molar ionic conductance of cation and anion respectively. The molar ionic conductance of cation and anion respectively at zero concentration. Now come to the explanation of Coulom's law. Explanation of Coulom's law. देखो आम कोल्हार्स लॉ रे कहले इनफिनाइट डाइल्यूशन रे जीरो कंसंट्रेशन रे इनफिनाइट डाइल्यूशन बा जीरो कंसंट्रेशन रे जेतेबेले इलेक्ट्रोलाइट संपूर्ण भाव में आयोनाइज होइछि संपूर्ण भाव में डिसोसिएट हो जाइछि सेतेबेले प्रत्येक आयन रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस प्रति एक निर्दिष्ट अवदान अछि से जो आयन सहित संलग्न ही थाउ बा न थाउ एवं जीरो कंसंट्रेशन रे बा इनफिनाइट डाइल्यूशन रे गोटे इलेक्ट्रोलाइट रो मोलार कंडक्टेंस at zero concentration or equivalent conductance at zero concentration सेमानंकर आयन रो कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन रे आयन रो कंडक्टेंस रो समष्टि सहित समान। अच्छा एक्सप्लेनेशन रे कोल्हार्स ए लॉ को प्रपोज कले कहीं ना ही मेक ए स्टडी on the equivalent conductance and molar conductance of a pair of electrolyte of a number of pair of electrolyte containing a common cation or common anion से एमती पेयर गोटे गोटे जोड़ा करी इलेक्ट्रोलाइट नेले जो गोटे कॉमन cation टे अच्छी कॉमन आनियन टे अच्छी प्रथमे से गोटे कॉमन आनियन पोटासियम ब्रोमाइड नेले आ गोटे सोडियम ब्रोमाइड जो कॉमन आनियन टे अच्छी किंबा पोटासियम क्लोराइड आउ सोडियम क्लोराइड नेले जो कॉमन आनियन क्लोराइड आयन टे अच्छी he took two numbers of pair of electrolyte दुईटा पेयर चारिटा
इलेक्ट्रोलाइट को कनसीडर कले गोटे पोटासियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एवं एमानकर कंडक्टांस रो वैल्यू को मेजर कले एट जीरो कंसंट्रेशन कौन पाइले ना मोलार कंडक्टांस एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम ब्रोमाइड माइनस मोलार कंडक्टांस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एट जीरो concentration is same as the difference between the molar conductance at zero concentration of potassium chloride and sodium chloride. Sodium chloride. तमाने यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रो मोलार कंडक्टांस रो डिफरेंस वैल्यू डिफरेंस जेतिकी हला यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रो मोलार कंडक्टांस रो डिफरेंस रो वैल्यू मध्य सेतिकी हला एटा केते बेले संभव हबो ना जदि ब्रोमाइड आयन रो कंडक्टांस एवं ब्रोमाइड आयन रो कंडक्टांस दिटा को कैंसिल होतबो बा क्लोराइड आयन रो कंडक्टांस एवं क्लोराइड आयन रो कंडक्टांस दिटा को कैंसिल होतबो एवं एठी पोटासियम आयन रो कंडक्टांस रो वैल्यू जेतिकी हेतिबो एठी मध्य पोटासियम आयन रो कंडक्टांस रो वैल्यू सेतिकी हेतिबो एठी सोडियम आयन रो कंडक्टांस रो वैल्यू जेतिकी हेतिबो एठी सॉरी एटा सोडियम हां एठी सोडियम आयन रो कंडक्टांस रो वैल्यू जेतिकी हेतिबो एठी मध्य सोडियम आयन रो कंडक्टांस रो वैल्यू सेतिकी हेतिबो ता माने मु पोटासियम ब्रोमाइड रो कंडक्टांस को कहि परिबी जे लैम्बडा 0 K प्लस लैम्बडा 0 Br माइनस सिंधी लैम्बडा 0 सोडियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू लैम्बडा 0 Na प्लस लैम्बडा 0 Br माइनस दीटा को डिफरेंस नहीं गले दिस कैंसल्स पहले कौन ना लैम्बडा 0 के Br माइनस लैम्बडा 0 सोडियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू लैम्बडा 0 K प्लस माइनस लैम्बडा 0 Na प्लस. So this is equal to lambda 0 K plus minus lambda 0 Na plus. So this indicates that equivalent conductance or molar conductance of a potassium ion at zero concentration is same whether it is associated with bromide ion or chloride ion. Similarly, molar conductance or equivalent conductance of sodium ion at zero concentration is same whether it is associated with bromide ion or with chloride ion. So this is the explanation where there is a common anion. Similarly, आमे गोटे common cation को लेकर मध्य करि परिबा common cation को लेकर मध्य करि परिबा कॉमन काटियन ने नवा गोटे कॉमन काटियन जे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन काटियन पोटासियम काटियन टा कॉमन था पोटासियम ब्रोमाइड पोटासियम क्लोराइड इटा गोटे ने नवा आ गोटे सोडियम ब्रोमाइड सोडियम क्लोराइड ये गोटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो थे पोटासियम आयन कॉमन ये गोटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो थे काटियन सोडियम आयन मध्य कॉमन वर्तमान यही दुईटी इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टांस रो वैल्यू जीरो कंसंट्रेशन ने मेजर करिवा परे आमे तार डिफरेंस को बाहर कले दैट इज लैम्बडा m0 पोटासियम ब्रोमाइड माइनस लैम्बडा m0 पोटासियम क्लोराइड दीटा जाकर पोटासियम आयन कॉमन तमाने तबे दिस डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एंड क्लोराइड आयन यार डिफरेंस रो वैल्यू जतिकी पाइले वर्तमान यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रे आमे कंडक्टेंस रो डिफरेंस मध्य सेतिकी पाइले सोडियम ब्रोमाइड माइनस लैम्बडा m0 सोडियम क्लोराइड समान डिफरेंस एवं इटा को खोल देले लैम्बडा m0 KBr इज इक्वल टू लैम्बडा 0
के प्लस लैम्ब्डा 0 ब्रोमाइड माइनस KCl टा केते गेला ना लैम्ब्डा 0 माइनस लैम्ब्डा 0 के प्लस माइनस लैम्ब्डा 0 Cl माइनस. So this cancel, this cancels. So net result is lambda 0 bromide minus lambda 0 Cl minus. So this is equal to lambda 0 bromide minus lambda 0 Cl minus. अच्छा बर्तमान देख जे दीटा इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टेंस वैल्यू 0 कंसंट्रेशन में बाहर करने पर आम डिफरेन्स वैल्यू जी पाइले से डिफरेन्स या सहित सामान है जो थे कॉमन काटियनटे अच्छी एवं ब्रोमाइड आउ क्लोराइड आयन ये ब्रोमाइड आउ क्लोराइड आयन सहित आसोसिएटेड अच्छे ये ब्रोमाइड आउ क्लोराइड आयन सहित आसोसिएटेड अच्छे. अच्छा तेबे ये आम ये कनक्लूजन में पहुँचा जे यही आयन दीटार कंडक्टेंस डिफरेन्स जहाँ ये दीटा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस डिफरेन्स से अतएव ब्रोमाइड आयनटा सोडियम आयन सहित आसोसिएट रहिले तार कंडक्टेंस वैल्यू जी हम क्लोराइड आयन सोडियम आयन सहित आसोसिएट रहिले तार कंडक्टेंस वैल्यू से हम ये ब्रोमाइड आयन कंडक्टेंस वैल्यू सोडियम आयन सहित आसोसिएट रहिले जी पोटासियम आयन सहित आसोसिएट रहिले से क्लोराइड आयन कंडक्टेंस वैल्यू जी से सोडियम आयन सहित आसोसिएट रहिले बा पोटासियम आयन सहित आसोसिएट रहिले से हम ना ये दीटा डिफरेन्स वैल्यू केबे समान हो न था. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कोल्हार्स लॉ. नाउ let us discuss the applications of Kohl's law. Applications of Kohl's law. अच्छा आम या पूर्व इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस में डिस्कशन करथिले जे मोलार कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot be obtained graphically आम केबे पाई परिबा नहीं by extending the conductance curve to 0 concentration. आम कोल्हार्स लॉ द्वारा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टेंस वैल्यू 0 concentration रे बाहर करि परिबा by knowing the conductance of equivalent conductance or molar conductance of some strong electrolyte at 0 concentration. For example, या पूर्व आम कही जे एसिटिक एसिड गोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट एवं एसिटिक एसिड रो मोलार कंडक्टेंस बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस at 0 concentration को ग्राफिकली पाइबा संभव नुहे. एक आम ग्राफिकली पाई परिबा नहीं किंतु आम एई वीक इलेक्ट्रोलाइट कोल्हार्स लॉ द्वारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस एट 0 concentration को पाई परिबा provided the conductance of some strong electrolyte like sodium acetate and strong acid HCl and a strong electrolyte sodium chloride salt is known. यदि एमानकर कंडक्टेंस वैल्यू दिया जाइए एवं जो गुड़िक सबुगुड़िक स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट जार कंडक्टेंस 0 concentration आम पाइपर बाय सिंपली एक्सटेंडिंग द कंडक्टेंस कर्व टू 0 concentration तेबे एई मानक वैल्यू आम गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टेंस एट 0 concentration को पाइपर केमती ना लैम्ब्डा m0 एसिटिक एसिड is equal to lambda m0 sodium acetate plus lambda m0 HCl minus lambda m0 NaCl. That is lambda m0 acetic acid sodium acetate के था ना lambda m0 acetate ion plus lambda m0 Na plus
plus lambda m0 H plus lambda m0 Cl minus lambda m0 Na plus minus lambda m0 Cl minus. This cancels, this cancels. पहिलो कोण ना lambda m0 acetate ion plus lambda m0 H plus L, the summation of the two ions of the acetic acid. So equivalent conductance or molar conductance of weak electrolyte can be calculated from the Coulom's law if the equivalent conductance or molar conductance of strong electrolyte at zero concentration are given. Take another example. एटा में गोटे weak acid नेले आ गोटे weak base रनवा, weak base. Weak base, that is ammonium hydroxide. It is a weak base and we have to find out the molar conductance at zero concentration of ammonium hydroxide. Given are lambda m0 ammonium chloride, lambda m0 sodium hydroxide and lambda m0 NaCl. So lambda m0 ammonium hydroxide is equal to lambda m0 NH4Cl plus lambda m0 NaOH minus lambda m0 NaCl, that is lambda m0 ammonium ion plus lambda m0 Cl minus ion plus lambda m0 Na plus ion plus lambda m0 OH minus ion minus lambda m0 Na plus minus lambda m0 Cl minus. So this cancels, this cancels. कौन पाइले तले ना lambda m0 NH4 plus lambda m0 OH minus. Sum of the ionic conductances of ammonium ion and hydroxide ion at zero concentration is equal to the molar conductance of ammonium hydroxide at zero concentration. This is one of the application of Coulom's law, where molar conductance of an weak electrolyte at infinite dilution can be calculated. Now let us discuss the second application of Coulom's law. Second application of Coulom's law, calculation of degree of ionization. Calculation of degree of ionization of weak electrolyte. Degree of ionization alpha. Degree of ionization alpha of weak electrolyte. गोटे weak electrolyte रो degree of ionization को केमते में पाइबा. अच्छा सपोज गोटे weak electrolyte कहली AB, weak electrolyte AB which ionizes as A plus B minus ions. Suppose
at time t is equal to 0 1 mole per liter of the weak electrolyte is taken तबे 0 टाइम रे कौन से आयन्स प्रोड्यूस है नाही एटा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट होइथिबा जुगु जतबे इक्विलिब्रियम टे एस्टाब्लिश हला इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश होइछि एवं एट इक्विलिब्रियम सपोज एथिरो अल्फा मोल डिसोसिएट हला एवं एथिरा में अल्फा मोल्स पाइले एथिरा में अल्फा मोल्स पाइले तबे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा को हम कहजंती नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच स्प्लिट इनटू आयन नंबर ऑफ molecules which split into ions divided total number of molecules dissolved। अच्छा देखो ये ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रे आम चाहूँगी जे जेकोसी गोटे कनसेंट्रेशन रे ये केते आयोनाइज होइछि अर्थात ये 100% आयोनाइज हेले केते आयन्स प्रोड्यूस करिवो 100% आयोनाइजेशन केते बळे हबो ना जीरो कनसेंट्रेशन रे बा इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे एवं गिवन कनसेंट्रेशन रे ये केते नंबर आयन्स प्रोड्यूस करुछि एटा को हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कहबा जे टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एट जीरो कंसंट्रेशन जो कहलो जे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच स्प्लिट इनटू आयन केतेटा मॉलिक्यूल आयन रे स्प्लिट हेले डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में केते नहीं आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन माने केते ना टू व्हाट एक्सटेंट द इलेक्ट्रोलाइट इज आयोनाइज्ड केते एक्सटेंट रे इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हिची तबे एटा को हमें कहि परिबा जे नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड at any concentration C divided number of ions produced at जीरो concentration ये जहाँ ये मध्य से number of molecules which split into ion divided total number of molecules dissolved केतेटा मॉलिक्यूल आयन रे स्प्लिट हेले एवं केते मॉलिक्यूल्स नहीं थिले अर्थात से इलेक्ट्रोलाइट रो यदि संपूर्ण आयोनाइज हुए 100% तबे से केतेटा आयन प्रोड्यूस करि परिबो सेटा नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एट जीरो कंसंट्रेशन सेति होछि तार 100% आयोनाइजेशन केते बेले सेते बेले होबो ना जीरो कंसंट्रेशन रे जीरो concentration at zero concentration जेकोसी गोटे कनसेंट्रेशन से केते परिमाण आयन्स प्रोड्यूस करिछि देखो नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एट एनी कनसेंट्रेशन C कनसेंट्रेशन रे केतेटा आयन प्रोड्यूस करिछि सेटा को केमति पाइबे ना सेही कनसेंट्रेशन रे तार कंडक्टेंस रो वैल्यू केते मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू केते एवं नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एट जीरो कंसंट्रेशन तमाने जतले मो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देली से संपूर्ण भाव में आयोनाइज हो गला तेबे सेही संपूर्ण आयोनाइजेशन रे जेतिकी कंडक्टेंस रो वैल्यू पाइली से कंडक्टेंस होची मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन तेबे मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन रे आमे कोन कहउछुंती जे इलेक्ट्रोलाइट संपूर्ण भाव में आयोनाइज हो गला संपूर्ण भाव में आयोनाइज 100% आयोनाइज सो नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एट जीरो कंसंट्रेशन इज molar conductance at zero concentration so degree of ionization alpha is equal to lambda mc by lambda m 0 सीधा भाव में देखो जे सपोज आम इलेक्ट्रोलाइट को C कंसंट्रेशन रे नहीं तेबे C कंसंट्रेशन रे जेतिक मो मोलार कंडक्टेंस पाइछि सेटा कहा जुगु
ना सी कनसेंट्रेशन रे से सॉल्यूशन भितर जेतिकी नंबर आयन्स थिबे तेणु सी कनसेंट्रेशन रे मु जो मोलार कंडक्टेंस पाइली से मोलार कंडक्टेंस करेस्पॉन्ड कला जे सही समान सी कनसेंट्रेशन रे सॉल्यूशन भितर केते नंबर आयन्स अछंती सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच स्प्लिट इनटू आयन्स और नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन that is lambda mc so this corresponds to lambda mc वर्तमान सॉल्यूशन को डाइल्यूट करबा परे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़िबा जो कंडक्टेंस रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी गला पुणी डाइल्यूशन कले पुणी कंडक्टेंस रो वैल्यू बढ़िला तो एमिति गोटे पॉइंट रीच करिवो जेतबेले फर्दर डाइल्यूशन रे आउ कंडक्टेंस रो वैल्यू बढ़िला नाही कंडक्टेंस रो वैल्यू मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू स्थिर रहिला केतेबेले ना जेतेबेले आमे डाइल्यूशन को इनफिनाइट कर देले तबे से इनफिनाइट डाइल्यूशन रे आउ जेतेबेले मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू पहुंचला पर आउ बढ़ू नाही सो दैट करेस्पॉन्ड्स टू 100% आयोनाइजेशन number of ions produced at zero concentration where 100% ionization or total number of molecules dissolved. So total number of molecules dissolved correspond to lambda m 0. So degree of ionization alpha is equal to lambda m c by lambda m 0. Now calculation of degree of ionization. देखिए ये आम कही जदि यार कनसेंट्रेशन को मु सी नेबी तबे एथरू डिसोसिएट हम केते ना सी माइनस सी अल्फा बा सी इंटू 1 माइनस अल्फा तबे ये केते गेला ना सी अल्फा इंटू सी अल्फा तबे तबे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू केते गेला ना सी अल्फा इंटू सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा सी कैंसल्स सो दिस इज सी अल्फा रो स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस ऑफ अल्फा कैन बी टेकन एज 1 so अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी रो रूट ओवर के बाई सी रूट ओवर जोटा आम आगुरी बाहर करते सो अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी रूट ओवर बा मु डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा बाहर कर सो अल्फा तो डिग्री ऑफ एटा गोटे इक्वेशन 1 आ गोटे है जे के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अल्फा को आम पाइले lambda m c by lambda m 0 so k is equal to c into lambda m c by lambda m 0 rho square. So this is calculation of dissociation constant. Now the last application is calculation of solubility of a spirantly soluble salt. Solubility of a spirantly soluble salt like silver chloride, barium sulfate, lead sulfate, etc. Suppose गोटे spirantly soluble salt कहली silver chloride, there is an equilibrium between the ions and the undissociated molecule. आम या पूर्व जानते जे लैम्ब्डा m इज इक्वल टू काप्पा इंटू 1000 बाई m तेबे मु जतबे सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन लेछि एटा m टा कोन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन पर स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन रो कनसेंट्रेशन टा कहा सहित सामान ना स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट रो सॉल्यूशन टा सब बेले गोटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एवं तार कनसेंट्रेशन मोलारिटी इज इक्वल टू solubility of the spirally soluble salt. So the solubility of the spirally soluble salt is equal to kappa into
1000 by lambda m. So this is all about Kohl's law and its application. So we have completed Kohl's law and applications of Kohl's law. The second part of the PDF which have been sent in the second part of the PDF, जो 16 पेज PDF सेकेंड पार्ट रे जाइए से फास्ट हूँ कोह्लर्स लॉ एवं तार एप्लिकेशन. सो कोह्लर्स लॉ एवं तार एप्लिकेशन आम संपूर्ण भाव में डिस्कसन करदे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोह्लर्स लॉ एंड इट्स एप्लिकेशन. वी विल बी डिस्कसिंग galvanic cell in our next class. Thank you.